Hello everyone, good evening. Welcome to the session. This is Priyasha Das and we are live on CrackThat where we will be figuring out the most important GK and current affair questions with respect to CMAT examination. जहाँ मैंने इस आज के session में agenda divide कर दिया है. Let us not only work on the static GK topic wise, let's also do the current affairs topic wise. Okay, there are plenty of videos on my channel, on other channels where I have come live, जहाँ पर मैंने आपको current affairs month by month तो बता दिया है. Now it's relevant that we also do it topic by topic so that revision भी हो जाएगा, नई questions भी हम कर लेंगे, है ना? So let's get started with the 3 topics which we are going to start off today. And do let me know if I am audible or visible, guys. Drop a hi in the chat so that मुझे पता चले कि आप लोग मुझे सुन सकते हो, देख सकते हो. हाय शौनक, वेलकम. ओके, ग्रेट. हेलो ममता, वेलकम टू द सेशन. Okay guys, let's get started then. I hope I am visible, audible both. Hello Mithilesh, welcome. Okay, so the 3 topics with which we are going to getting started is summits and conferences. Okay, international news is also correlated to it because कुछ सबमिट्स इंडिया में होते हैं, कुछ इंडिया के बाहर होते हैं जिनका इंडिया एक पार्ट होता है, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर इट. Hello Himanshu, welcome to the session. Thank you so much for the confirmation. Shaunak, we are doing both of them come together, okay? And art and culture right here, much of it would be in anything static in nature but would definitely be a part of the current news. इसीलिए, okay, that linkage which I have already told you people before. Hello Devusmita, how are you? Welcome to the session. Okay then, let's get started. जिन लोग आ चुके हैं वो लोग सेशन को लाइक भी कर दे प्लीज थोड़ा सा. All right, let's start with the first question and we'll get started quickly. आज जल्दी questions हम करेंगे, ठीक है? So let's start with the first question, guys. Hello Harsh, welcome to the session. The question says, which city is the host of Smart Cities Smart Urbanization? Hello Ayushi, welcome to the session. Guys, I give you a quick 30 seconds to answer this question. That's fine, Ayushi. Mithilesh has given me an answer. Devasmita, Harsh as well. Wow, Vishesh, so sweet of you. Thank you so much. I hope your interview goes really well. So happy to see that, Vishesh. विशेष आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लूं, एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनाने का सोच रही हूँ. Shanak, Komal, okay, thank you so much for your answers. Now almost 10 seconds are left. Okay, so sweet of you, Vishesh. Thank you. Let's get started with the answer, guys. Time up. The answer for this question. Hello Pankaj, welcome to the session. Hi, actually, I hope I am pronouncing it right. Hey, I remember your name. Earlier also I had problem pronouncing your name only. Okay, so Surat is the right answer. ठीक है, सूरत कहाँ है guys? Can you guys tell me where is Surat? Don't tell me India, okay? Where is Surat? Okay, and let's talk about the answer in detail. GJ, that's right keyword. Yes, Komal, Devasmita, right, it's in Gujarat. So talking about the Smart City Smart Urbanization Conference, it is organized by the Union Ministry Housing and Urban Affairs. Please समझे कि ये MHA के अंडर आता है एंड इन एसोसिएशन विद द सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन. एंड इसमें क्या स्पेशलिटी है? इन द इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट जो कि 2020 में हेल्ड हुआ था, शुरू हुआ था, ओके, सूरत एंड इंदौर रिसीव्ड द अवार्ड एज द बेस्ट सिटी एंड उत्तर प्रदेश वाज अवार्डेड एज द बेस्ट state, ठीक है. And several initiatives were launched including the urban outcomes framework of 2022, data portal and the outcome output dashboard and for the smart city mission. तो ये smart city oriented है. इसमें से आप 2-3 पॉइंट्स उठा सकते हो, ठीक है. ये पॉइंट है कि सूरत और इंदौर को बेस्ट सिटी मिला था एंड उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट मिला था. एंड ये किस गवर्नमेंट के अंडर आती है, यानी गवर्नमेंट के किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ओके, डन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जितने लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा हाई भी ड्रॉप कर दो और एक लाइक भी प्लीज. ऑल राइट, या
Himanshu, the objective of that mission is definitely to increase the urbanization quotient. If I'm making a smart city, I'm planning that out, and planning that out will include electricity, housing, education, sanity, the cleanliness, and many more things like that. So that's the mission of each of these plans. Yes, Devasmita, of course. G20 is always important. Okay. Don't need to always go by the detail, but go by the theme of this year and go by the participating countries. अगर किसी country में कोई conflict चल रहा है तो just pay an attention towards that. That's all. Okay. Yeah, Shaunak, definitely. You can definitely DM me in the Telegram for those specific questions. I'll answer you based on whenever I'm available. Okay. Surely I'll answer you back. Komal, very nice. Thank you for the Union Minister Hardeep Singh Puri. Well, guys, we have a new question on the chat. I mean, on the screen. So please do answer that as well. पंकज, आयुषी एंड मिथिलेश ने तो मुझे आंसर कर दिया है. हर्ष का भी आंसर आ गया है. Sure. Okay. Shaunak has also answered. Wow. Nice. 5, 4. Komal also. Okay, great. Most probably. Okay, we'll go by your probable answer, but the answer of this question is not Goa. The answer of this question is Mumbai, guys. Okay, so some of you were right, some of you were wrong. Okay, now let's see. जो wrong है उनको मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ अपने हर जीके सेशन में कि अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो क्लास में आने का यही तो फायदा है कि आप कुछ इंटरेस्टिंग वे में सीख के जा रहे हो. ओके, सो फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन मुंबई एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट अ क्रूज लाइन विच इज द ओनली क्रूज लाइन इन इंडिया राइट नाउ, नॉट द रिवर गंगा वन, द प्रॉपर क्रूज इन इंडिया. डू यू गाइज हैव हर्ड अबाउट द टर्म कॉर्डेलिया क्रूजेस? हाँ यस आयुषी, वहाँ पे पोल होता था ना, यहाँ पे भी हो सकता है, बट देन इट वुड बी वेरी टेक्टिक फॉर मी टू कीप ऑन टाइपिंग हियर ऑल्सो ना, तो उसने टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे. कॉर्डेलिया क्रूजेस सुना है? ओके ग्रेट. मेरा तो ब्लॉग बनते रह गया उस पे यार. मतलब आई वेंट लास्ट ईयर. ओके, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. ओके, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली लाइक वर्ल्ड क्लास. मुझे फॉरेन जाने वाली फीलिंग आ गई. बट देन द थिंग इज इट स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मुंबई पोर्ट पे ही वो सबसे पहले शुरू हुआ था. ओके, नो प्रॉब्लम देवस्मिता, एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लेना. सो द वीडियोज आर फुल ऑन देयर, यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस सम ऑफ इट. एंड मुझे अगर टाइम मिला तो मैं भी कुछ एडिट करके डालूंगी कभी. ओके, 1 ईयर का लेट पोस्ट बनाकर. सो इफ वी टॉक अबाउट द टूरिज्म मिनिस्टर, ही इज किशन रेड्डी. पॉइंट नंबर 1 टू नोट. पॉइंट नंबर 2, he inaugurated this cruise conference in Mumbai. Point number 3 is he invited the domestic and international tourist come cruise in India. ये थीम थी, तो आप थीम डेफिनेटली देख सकते हो. ओके, अगेन ऑब्जेक्टिव लिखा है हिमांशु, जस्ट गो थ्रू द स्लाइड. इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइन बिटवीन द कॉन्फ्रेंस. एंड ऑफ कोर्स ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है. जस्ट इन केस यू गाइज नो दैट टूरिज्म से काफी परसेंटेज ऑफ इनकम आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. सो देयरफॉर दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. ओके, कोमल, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स इज सरबंदा सोनोवाल. थैंक यू सो मच कोमल, हमेशा रहा करो मेरे सेशन में. हाँ, ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मुझे हमेशा जरूरत पड़ेगी. थैंक यू, थैंक यू. ऑलराइट गाइज, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. चलिए फटाफट थर्ड क्वेश्चन करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड हियर इट इज. Okay, we'll have our next session day after tomorrow, and that will be on innovation and entrepreneurship. Mithilesh, okay, very good. We have got one answer from Mithilesh. Anyone else wants to give a try quickly? I'll wait for 25 seconds. Devasmita, Rajin. Hi Rajin, welcome to the session. Harshita, okay.
meanwhile, when people are answering the question, Rajan had a question which I would like to address. Okay, Rajan had a question that I don't understand the gender, okay, by the name Rajan, so I can just address that. Rajan had a question that how to strike the correct balance between static GK and the current affairs part. So I have been telling this in multiple videos of mine that 90% of the static GK questions are all coming from the current affairs only. That means अभी अभी किसी रिवर में pollution बढ़ गया है तो इस वजह से वो न्यूज़ में आई थी, तो उस रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा. Now that does not make it a static GK question. That makes it a current affair oriented question only, because just because you read about that, what should I say, that river recently, so you are expected to know certain things. इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी लोग कैट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं उनको ये बोला जाता है कि एडिटोरियल रीड करना तो मस्ट है, क्योंकि सिर्फ एडिटोरियल रीड करने से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फायदा नहीं होता है, आपकी करंट अफेयर्स और जीके स्ट्रांग होती है. Don't think that just because CAT does not asks you GK as a specific topic, they don't give you weightage on that, or they don't give importance to that. Okay, time's up. Hi Dipali, hello Komal. I mean Komal was already there. Dipali. Okay, fine. So the answer of this question is China, option B. Okay, now the explanation of it would be that the 8 BRICS environment ministers meeting was held virtually. तो ये कहीं पर नहीं हुई थी, ये virtually held हुई थी. So please remember this, under the presidency of China. So the Union Minister of for Environment, Forest, Climate Change, Bhupender Yadav, number 1, keep this in mind, who is the Environment, Forest and Climate Change Minister. He participated in the meeting from India. इंडिया की तरफ से ये आए थे. हेलो नीरज. द थीम ऑफ द मीटिंग, हिमांशु पूछे उससे पहले यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है हिमांशु, है ना, तो पढ़ लेते हैं. ओके, दैट फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट. नाउ इस बीच में एक वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन देना चाहती हूँ आपको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अशर? राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. Anyone, give it a try. Usher. Ministers from Brazil, Russia, South Africa also participated in the meeting, and this joint statement was adopted in the meeting. Shaunak says prosper. Okay, anyone else? Bring in. Hi Sami, welcome to the session. Okay, prosper, bring in. Bas itna hi. No one else with the word usher. To bring in would be a very nice explanation for this. Yeah, okay. So that we'll go with that. Very good, Shaunak and Ritika, very nice. Okay, Devasmita, we'll talk about it. Just let me give another question so that folks would spend some time thinking about it, and I can take that up personally on DM as well. Okay, Devasmita, so you can refer there on Telegram or Instagram, DM me anywhere. Okay, no problem. Alright guys, here's the 4th question for all of you. Which is the venue of the World Summit of Information Society Forum 2022? And this Ranchi के लिए एक छोटी सी recommendation है. You should definitely go for the HRM program for sure. मैं एक scope बताती हूँ. पढ़ाई बहुत अच्छी तो नहीं बोलूँगी, बट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी का क्या कोई डेफिनेशन नहीं होता है. आप अच्छा पढ़ोगे ना, यू वुड गेट मल्टीपल रिसोर्सेज. मैं खुद दूंगी यार आपको रिसोर्सेज पढ़ने के लिए, आप बोलो तो. अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको मार्केट में नहीं मिल रहा, यू कैन रेफर, यू कैन टेल मी. अगर मेरे पास है या मेरे किसी जान पहचान के पास है, आई वुड गिव यू दैट. आई हैव बीन डूइंग दिस ऑल द लास्ट 2 years राइट ऑन टेलीग्राम. आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ही लाए गए हैं, ठीक है. मैंने भी खुद कुछ नहीं परचेज किया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट फर्स्टली. सेकेंड, दैट if you are targeting Tata Steel or any college, company like that, Tata Steel ka majority HRs are from this Ranchi, okay, and I have myself viewed it on LinkedIn, okay, so don't worry about that. Acha college hai. If you don't want to put in efforts in next year, Devasmita, you can go for it. So many C's. Mansi, I'm not sure for it. Maybe Devasmita can help you with this. I'm not sure.
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, मुझे कॉन्करेंट यूजर्स ज्यादा दिख रहे हैं और लाइक्स कम दिख रहे हैं, थोड़ा तो लाइक करना बनता है, इजंट इट? ओके फाइन. सो फॉर दिस क्वेश्चन गाइस द आंसर इज जेनीवा. ये आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है. जेनीवा विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, मोस्ट ऑफ यू नहीं, ऑल ऑफ यू हैव गिवन मी द राइट आंसर हियर. वेरी वेरी नाइस. जेनीवा के बारे में थोड़ा पॉइंट देख ले. तो इसका शॉर्ट फॉर्म है WSIS, दैट इज द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी. इंफॉर्मेशन सोसाइटी से आपको क्या समझ में आ रहा है? लेट्स हैव अ क्विक लुक. इट स्टार्टेड ऑन 15 मार्च, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये भी वर्चुअल फॉर्मेट में था ना. वर्चुअल फॉर्मेट में बोलने के बार बार मैं हाईलाइट इसीलिए कर रही हूँ कि हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए that where was this held, and one of the options can be online, so you should know if you are learning about it. Bilkul Rajin, that's right. And with the final week held physically from 30, see, physically held in Geneva. So the first part was held online and the second part was held physically. Okay. Now, the forum was held under the theme of ICTs for well-being, inclusion and resilience. What is inclusion guys? Any example? ये बहुत important topic है, especially when it comes to MBA, especially when it comes to GDPIs, especially when it comes to VAT round. Tell me, what is inclusion? किसको include करने का सोच रहे हो आप लोग? Whom are we planning to include? Tell me. That's a question for all of you. You guys are, preparing for MBA. Be ready for these things. ये, of course, they will not ask you कि किस celebrity ने किस celebrity से शादी की over there, but they will ask you what is inclusion and how can we include inclusion in our companies. कोई एक एग्जाम्पल दो. मैं किसको इंक्लूड करने की बात कर रही हूँ? मैं गर्ल्स को इंक्लूड करने की बात कर रही हूँ. किसको इंक्लूड करने की बात कर रही हूँ? विच कैटेगरी ऑफ पीपल आर वी गोइंग टू इंक्लूड इन द वर्क फोर्स? इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज. अच्छा, यू आर गिविंग मी एन एग्जाम्पल ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू द वर्ल्ड समिट. ओके, फेयर इनफ. आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज. कंपनीज हैव अ वेरी, the talk of the day is inclusion these days. Tata Steel has included recently so many transgenders. Yes, Shauna, PWDs, that is the disabled people. And the recent news was that Tata Steel has, came up with a plan of inclusion and including so many transgenders into their workforce, which is for the first time someone is doing this with all dignity, and that's why it is making news. Yes, correct. Inclusion means welcoming people from all sorts of background, irrespective of their caste and creed. Excellent, Shadia. Very nice. So I was expecting these kind of answers. Yes, inclusion and diversity. इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए जहाँ से भी आपको मिल रहा है resources, because these are some very relevant topics being asked these days in your GDPI rounds. Okay, so all the best. Next question on the screen for everyone. Question number 5. Now we come down to थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर. तो हमने अभी तक इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए, थोड़े बहुत सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कवर किए. नाउ इट्स टाइम फॉर गंगोर फेस्टिवल. शौनक, सामी एंड रेजन, आयुषी, रितिका, वेरी नाइस. पंकज, good job. Everyone is going with Rajasthan. Okay. अब सब जा रहे हैं तो सही होगा. Geneva is in Switzerland. Switzerland has the world's largest passenger train. वाह कोमल, इसे कहते हैं association. So guys, you can also use the trick of association to remember the things in GK or else any other topic which you refer to. That will really help. Nanish, welcome to the session. Anshika, welcome to the session. Komal, Dipali, very nice. All of you are right guys. Rajasthan is the correct answer. थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं. That Gangor festival is predominantly celebrated in the state of Rajasthan, and Rajasthan Tourism Department ने इस festival को कोविड के बाद, अभी 2 साल के गैप के बाद सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है. सो द फेस्टिवल commenced on 3rd of April, continued for 18 days, and it has made special arrangements to make the foreign tourists aware of the culture of the state.
बहुत पैसे मिलते हैं उन्हें फॉरेन टूरिस्ट से, ठीक है, बहुत ज़्यादा. Like I've literally visited a number of places where foreigners do come. मेरे आँख के सामने I purchased a fruity for like let's say, see the print price is 15 but they take 20. Like if you go, for example, if you go to India, you know, any tourist place, ठीक है, जैसे I was there in Mumbai near Taj, तो वहाँ पर I was you know taking pictures, तो I felt thirsty, मुझे लगा पानी वानी पीते हैं, कुछ पीते हैं, तो फ्रूटी पी लिया. तो वहाँ पे दे लाइक 5 रुपीज़ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. लाइक ओके, बट वहीं पे ही चार्ज्ड अ फॉरेनर, लाइक आई वाज शूटिंग एंड आई सॉ हिम गिविंग अ नोट ऑफ 50 रुपीज स्ट्रेट एंड उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया. मुझे अच्छा नहीं लगा, बट देन आई वाज नेवर, यू नो, आई नेवर केम इन कॉन्टैक्ट विद दैट फोक. और वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि आप ने उसको ज़्यादा चार्ज किया तो वो मुझ पे भड़केगा, आप इंडियन हो, आप मेरा पेट काट रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो नॉट सो मच इनटू दैट, बट देन हाँ, मैंने अपनी आँख से देखा है फॉरेन टूरिस्ट को ज़्यादा चार्ज करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर ऑल ऑफ यू. शौनक, एग्जाम भी बैंगलोर फॉर HRM specialization, how's it? Can't tell you much, Shaunak, because I don't know anyone studying there, so I can't give you a in-house experience over there, but placement wise average hai. You know guys, all of you, let me tell you one thing, it is completely your call based on कि आप next year के लिए prepare करने के लिए ready हो या नहीं. If due to any circumstances you are not ready to prepare for the next year, then yes, of course you will have to adjust back on any of these colleges, and then tell me a list of the colleges you are going to apply for or you know select as such. तो मैं आपको definitely एक genuine reply दे दूँगी. But the thing is that if you are planning for the next year or any other exam, रुक जाओ. Okay, this happens in Victoria Memorial also. Komal, okay, Kolkata. Sami, same thing जो मैंने अभी शौनक को बोला. If you are planning for giving the exam next year, तब नहीं. And if you are not planning to give the exam again, tell me a list of colleges you are getting offers from, and then we can discuss over it कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है. Most of you have come up with B as the answer, that is Gujarat. कि माधवपुर मेला तो गुजरात में होता है मैम. We know it, guys. You already know it, really. Like, how many of you are from Gujarat? And if you are not from Gujarat and you know it, then it's excellent. You guys are doing a great job. All right. So माधवपुर मेला के बारे में स्पेशल ये है कि when this माधवपुर मेला was held, okay, at that time president was Ramnath Kovind. So please note that, okay. And उन्होंने inaugurate किया था जाके this 5-day cultural fair को, ठीक है. दिस फेयर सेलिब्रेट्स द मैरिज ऑफ लॉर्ड कृष्णा विथ रुक्मणी. तो इसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस है. ओके, दैट सिग्निफिकेंस इज, सी माधव से आप गेस कर सकते हो कि इट्स रिलेटेड टू कृष्ण जी ओनली, बट देन yeah, this was how I connected the dots. Now similar events are organized across Gujarat and northeast states also. Okay, from 2018 onwards, this Union Ministry of Culture and Gujarat government is together celebrating this. Oh my God, really Neeraj, excellent. ये हुई ना बात. We have a corollary here guys. We have someone who is completely opposite to all of us. वेल अच्छी बात है, इसी में तो मजा आता है. लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, क्विकली जल्दी जल्दी. रघु राजपुर was recently in news and is famous for which of the following types of paintings? Now this is a nice question. I know the answer. No, I mean I know the answer in the sense is I am related to the answer. I am related to the place as well. रितिका शौनक ने तो आंसर दे दिए. वेरी गुड. आई कैन गेस रितिका नोज अबाउट इट. योर टाइटल सेज सो. रितिका, यू आर फ्रॉम ओडिशा राइट? ओके. आयुषी, पंकज. आयुषी इज कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी. होना भी चाहिए. आंसर इज बिटवीन दीज टू ओनली. पंकज एंड सामी. ओके, ग्रेट, एक्सलेंट, वेरी नाइस. ओके, कूल. सो I'll wait for 5 seconds. Anshika, answer आ गया. Dipali, all right. Now I'll give a proper pronunciation of the correct answer. Okay. So proper pronunciation of the correct answer is Pattochitra.
Okay, and it's like PATTA, but then it's how it's pronounced. Okay, Patachitra, and this is a type of painting which is seen in Odisha. So if we'll read about it, it's a traditional painting of Odisha. I will also tell you, I didn't knew much about it before I actually watched a sorry, a travel vlog of maybe Curly Tales. Yeah, Curly Tales. So I watched a travel vlog of Curly Tales where I saw that she was going and visiting the villages, and there she saw these Patochitra paintings and all that. So from there also I got to know, and like that's why it's fresh in my mind. So it's very recently it was in news because of this reason. See, चीफ मिनिस्टर कौन है ओडिशा के? नवीन पटनायक, एंड ही हैज गिफ्टेड दिस टू पोप फ्रांसिस वेटिकन सिटी में जाके एज अ गिफ्ट, ये वाली पेंटिंग. तो इस वजह से ये न्यूज में थी, और न्यूज में थी इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया. समझ रहे हो बात को, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला था that these kind of things are always interrelated to the current affairs, हमेशा, all the time. Now the artist का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है अपिंद्र स्वाई. Okay, he and his entire family belongs to the village of Raghurajpur. Okay, that is in the Puri district, and it's world famous for its Patachitra paintings. Okay, okay, excellent. Let's move to the 8th question, everyone. 12 caste communities of which state has been added in the list of scheduled tribe? तो अभी अभी रिसेंट अमेंडमेंट में 12 कम्युनिटीज को ऐड किया गया है अंडर ST. थैंक यू कोमल. द कैपिटल ऑफ ओडिशा इज भुवनेश्वर, and it is also called as the city of temples. One more point to add, and CM is Naveen Patnaik, right? Harsha, welcome to the session. So Harsha has given us an answer for question number 8. आते ही आंसर कर दिया, very nice. What about others? जिन्होंने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दें. ओके, रिसेंटली मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी वहां पे हुआ था. करेक्ट कोमल, राइट. वी हैव रितिका एंड सामी ऑल्सो गोइंग विथ हर्षाज आंसर, बट इज हर्षाज आंसर करेक्ट? द क्वेश्चन इज दिस. आयुषी एज वेल. एक बात बताना चाहती हूँ कि साउथ में ना उतना ज़्यादा लफड़ा नहीं है इस कास्ट कम्युनिटी को लेके. आई मीन स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट को लेके. ओह रियली शौनक, एक्सीलेंट टू नो दैट. ओके, सो या माय क्वेश्चन इज कि ये सारा लफड़ा वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है. ये प्रॉब्लम्स आती कहाँ पर है आपको पता है? झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़. Not Madhya Pradesh, Chhattisgarh. Okay, Chhattisgarh. So the answer of this question is Chhattisgarh. Okay, उन्होंने 12 और न्यू कमिटीज बनाई हैं, and they are like इनको भी ऐड करो शेड्यूल ट्राइब में, इनको भी सारे प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स दो. Okay, so Union Cabinet has approved the inclusion of 12 caste communities, and this cabinet has also approved the inclusion of some tribal communities of Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Uttar Pradesh as well. Some, बट ये जो मेजर नंबर है ये छत्तीसगढ़ से आ रहा है. ठीक है, अब ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है, एंड ही सेड दैट ही वुड मूव विद द हेल्प ऑफ अवेलिंग द वेलफेयर बेनिफिट. अर्जुन मुंडा इज एसोसिएटेड विद झारखंड. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, नंबर्स पर उतना फोकस नहीं करती है CMAT. दैट्स अ गुड थिंग अबाउट CMAT. हाँ, ये टिसनेट में बहुत पूछा जाता था, but I'm not sure about CMAT. मुझे नहीं लगता I have seen any time a direct number oriented question. Okay, we have 9th question, and Ritika Shaunak have already given me the answer. Oh, nice. Sami as well. You guys are quick. 10 seconds के लिए थोड़े अपने गले को आराम देती हूँ मैं, तब तक आप आंसर दीजिए. Excellent, Neeraj, Anshika, Komal, thank you for the detail. Capital of Madhya Pradesh is Raipur, and check me, Chhattisgarh is Raipur, and CM is Bhupesh Patil. Very nice. Educated guess. Nice, Shaunak. I like it. Okay.
Harsha, Rajin and Dipali, you guys are right. Turkey is the answer और टर्की का न्यूज में होने का रीजन तो आप सभी को पता ही है. So there's no point of telling that in detail, but I'll tell you the important point regarding the question. Like इसमें एक मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन हुआ था 1936 में, where Turkey has control over both the Bosporus and Dardanelles Strait. तो दो स्ट्रेट्स थे उसके अक्रॉस जिस पे टर्की ने अपना कंट्रोल बता दिया, बोला कि भाई मैं ही हूं और कोई नहीं है, ठीक है. एंड नाउ दीज स्टेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्किश स्ट्रेट्स एंड दिस कनेक्ट दीज पर्टिकुलर सीज, जो आपको जानने की उतनी जरूरत तो है नहीं आई गेस, ठीक है. बट दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज द ओनली पैसेज थ्रू विच द ब्लैक सी पोर्ट्स कैन एक्सेस द मेडिटेरियन सी. सो ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करने वाले ये दो पोर्ट्स हैं, बॉस्पोरस और डार्डेनेलिस, ओके, जिन पर टर्की ने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है. बट अभी अभी रिसेंटली ये रशिया में वॉरशिप्स हो रही है एंड दिस वजह से ये न्यूज में आया था, ठीक है. खैर अभी टर्की को न्यूज में आने का अर्थक्वेक वाला रीजन है, बट देन जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस अप विथ यू गाइस. ओके, 10th क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. Which Asian country has recently imposed its longest power cut since 1996? अब देखो इंडिया तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा. हाय एके, वेलकम टू द सेशन. आई विल गो विथ एग्जामी चेन्नई कंपैरेटिवली, बट मुझे अभी प्रेजेंट स्टैट्स देखने होंगे एके. लाइक अभी का प्रेजेंट स्टैट क्या है, कैसी प्लेसमेंट है एनडीआईएम की. एंड आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग एके, इफ इट्स पॉसिबल आइदर ऑन एनी professional platform or I don't know if you can go to their websites and connect with any of the alumni and talk to them regarding the college, that can also be a good idea. वो आपको रियल पिक्चर दे सकेंगे. हाय रोहित, वेलकम टू द सेशन. पाकिस्तान भी ऑप्शन में नहीं है रोहित. अच्छा, अब देखते हैं ना कि लॉन्गेस्ट पावर कट होने का रीजन क्या हो सकता है. कि आपकी कंट्री किसी तरह की क्राइसिस में हो. ट्रू. बट वो तो आंसर ही नहीं है ना रोहित. हाँ, तो माय क्वेश्चन इज किसी तरह की क्राइसिस में हो. वेरी गुड शौनक, यू वांटेड टू राइट क्राइसिस आई गेस. ओके, सो क्राइसिस में अभी फिलहाल बांग्लादेश इंडोनेशिया तो नहीं है, श्रीलंका और अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है. बट तालिबान का कंट्रोल होना क्या पावर कट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नो. इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में है गाइस. सो लेट्स सी अबाउट दिस इन डिटेल कि नेशन वाइड 7.5 आवर्स डेली पावर कट. देखो इंडिया में आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज नॉर्मल और नॉट, बट देन श्रीलंका में इट वाज अबनॉर्मल कि 7.5 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी. दैट इज द लॉन्गेस्ट पावर कट इन द हिस्ट्री सिंस 26 years. एंड एज पर द ऑफिशियल सोर्सेज द कंट्री इज नॉट फेसिंग एन इशू इन द इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी. उन्हें कैपेसिटी में कोई इशू नहीं है, बट दे आर फेसिंग एन इशू इन द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस. तो कंट्री डज नॉट हैव इनफ रिजर्व्स टू इंपोर्ट फ्यूल. फैक्ट्रीज ठीक ठाक है बट फ्यूल डालने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है. तो दैट इज द क्राइसिस. अंडरस्टैंड दिस. लेट्स मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन एवरीवन. क्विक ऑन योर स्क्रीन. AK, कैन यू DM मी फॉर दैट? आई अगेन हैव टू क्योंकि मुझे उसके कट ऑफ्स नहीं पता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट वेलिंकर्स कट ऑफ्स अकॉर्डिंग टू एटमा का स्कोर. Okay, but Wellinger is a college in itself, like a nice college. Okay, we have answers from Shaunak and Neeraj. Germany has signed an energy deal with which northeastern country to reduce its dependence on Russia. अब क्यों reduce करना चाहता है dependence on Russia? Of course, because of the Russia-Ukraine war. Okay, Komal. Capital of Sri Lanka is Colombo. PM is Dinesh Gunawardena. Thank you so much. That's right. Okay, so we have answers from Anshika and Sami as well. तो कोई कह रहा है कतर, कोई कह रहा है UAE. What's the correct answer? Let's see. All are ready? Let's start with the answer. The answer is Qatar, guys. Okay, very good.
वी हैव आंसर्स फ्रॉम दीपाली एंड पंकज एज वेल. तो थोड़ा आंसर को डिटेल में देखते हैं. जर्मनी हैज साइंड दिस एनर्जी डील विद कतर एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप. और ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट सप्लायर सो फार of gas to Germany, but then recently Germany, which is the Europe's biggest economy, is seeking to become less dependent on Russia after Russia started to invade Ukraine. उसका consequence है ये. Okay, so Qatar's emir and emir means emirate, okay, and Germany's minister has discussed ways to enhance this bilateral relation in this energy sector. तो कतर से अब transaction करना चाहता है. Okay, let's go to the next question, everyone. Who are the authors of the book titled Little Book of Joy? सोच ले, समझ ले और आंसर करें. Ritika has started answering. Shaunak Shri, very good. ओके, पंकज, अंशिका, सामी. हिमांशु, हर्ष, सादिया. ओके, डन. So A, B, C, D, I have received all the options. And guys, come on, Harsh. Narayan Murthy does not write books. Sudha Murthy does that. Okay. Okay. Same for, cricketers would not be associated with a little book of joy. कौन हमें खुशियों के बारे में बताता है? बताओ. Who is that person who is responsible for that? Or who preaches us about joy and things like that? Option A would be the correct answer, Dalai Lama and Desmond Tutu. Now, yes, peace represents Dalai Lama. Yes, correct, Shaunak. That's a good representation. So, let's talk about it. Desmond Tutu is actually an archbishop and Dalai Lama, you all know only. Okay. So, इन्होंने 2016 में एक book लिखी थी, The Book of Joy, Lasting Happiness in a Changing World. The book sold more than 1 million copies and was translated into 40 different languages. Okay, a picture book edition then, okay, of a bestseller is set to release soon with text worked by Rachel and Douglas Abrahams and illustrations would be provided by Rafael Lopez. Okay, तो ये लोग एक picture oriented book भी अब show करने वाले हैं. Nice, Shri, very good. You know that, Harsha, very nice. Let's move to the other question, everyone. Which country is the host of Quad Leaders Summit? We are already past 7 minutes from our meeting time, but दो और questions हैं, उसके बाद we'll wind up our session. Which country is the host of the Quad Leaders Summit of 2022? हर्षा ने आंसर कर दिया है. ओके, हिमांशु ने भी कर दिया है, सामी ने भी कर दिया है. नाउ आई विल डू एन ऑप्शन एलिमिनेशन फॉर यू पीपल एंड आई वुड से इंडिया इज नॉट द आंसर. शौनक हैज, okay, शौनक हैज अ डिफरेंट आंसर. Anshika is confused between A and C, so Anshika, I have cut out India. Alright, the answer is Japan, guys. Let's talk about this in detail. इसका answer इस question से ज़्यादा important है. The second in-person Quad Leaders Summit was hosted by Japan. That's the answer of this question. Quad का मतलब quadrilateral होता है और quadrilateral का मतलब 4 होता है. तो 4 bodies इसमें part ले रही हैं, 4 countries इसमें part ले रही हैं, जिसमें इंडिया है, US है, जापान है and ऑस्ट्रेलिया है. You can make a note of all these 4 countries. Okay, India, US, Japan and Australia. India से Prime Minister गए थे नरेंद्र मोदी, who attended the Quad Leaders Summit, and the leaders of the 4 countries reviewed the progress of the group initiatives. चारों मिलकर आपस में सबको क्या फायदा दे रहे हैं. The newly elected Australian Prime Minister Anthony Albanese, ये point number है आपको याद करने के लिए, also joined this meeting for the first time. ठीक है. So this is, ये लोग कुछ कंट्रीज साथ में आके ऐसे
कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, दैट्स लाइक चलता है. ओके फाइन, लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन एवरीवन. इंडिया होस्टेड द इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग विथ विच कंट्री? It was written in the question, right, Himanshu, that they will check each other's group initiatives. That means India will see कि मुझे US, ऑस्ट्रेलिया, बाकी लोग जापान कैसे मेरा हेल्प कर रहे हैं, like how are they helping me out, and same the others will also do. Okay, and शौनक 2023 में ही ऐड हुआ है, तो this is like a added up news, right, all together. Okay, Pankaj and Dipali, I got 2 answers from them. What about others? Harsha. Sami, very good. 5, 3, 2, 1. And the answer is Sweden. Harsha, I would be very honest, please be updated as much as you can, क्योंकि ये मत सोचो कि पेपर 1 महीने पहले सेट हो गया था तो कोई क्वेश्चंस वहां से नहीं आएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट. ऐसा सोचना इज बेकार, क्योंकि आप सिर्फ पेपर को नहीं टारगेट कर रहे. मैं बार बार अपने हर स्टूडेंट से यही बोलती हूँ कि पेपर को अकेले मत टारगेट करो. when you are preparing for an exam, prepare from the scratch, that is the writing paper, up till your GDPI, that is working on your own personality and the current affairs as well. So you'll have to read the current affairs till the last date. Don't think that अरे एग्जाम तो 1 महीने पहले पेपर सेट हो जाता है, कहाँ ही हमें इस मंथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा. don't feel like that. Okay, जब भी कोई भी सीए को लास्ट मोमेंट में पढ़ने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम उसको तभी आती है. All right. Now let's talk about the Sweden answer. Industry transition dialogue was hosted by India and Sweden in Stockholm. Union Environment Minister Bhupendra Yadav addressed this summit, and this event was organized as a part of joint initiative of India and Sweden called as the Leadership for Industry Transition, and the minister said that the developed countries must take lead in the global transition towards net zero and low carbon industry transition. So Himanshu, पूछो, उससे पहले बता देती हूँ, this one is the real objective of holding this conference. Okay, moving towards the next question everyone, the last question for the day. Not the last, the second last question, because you guys know my last question. Which is the first country to announce a ban on missile tests against space satellites? काफी ironical answer है इसका. Any guesses? Okay, Shaunak, nice. Pankaj, great. All right. Harsha has given me an answer as well. Himanshu, okay. Guys, one small thing which I would like to tell you, if you people have any doubts regarding CMAT or anything as such, like kya karna hai, nahi karna, any questions like that, you can definitely drop it below any of these recent videos itself. I will answer to your query right there in YouTube. See, the first place where I reply the fastest is YouTube. Then I go and check my DMs on Instagram and Telegram. So of course, and of course you can, the best place would be here itself in the chat. I mean in the comment section. Okay, नीरज, अंशिका, सामी, सबके आंसर्स आ गए, कोमल के भी आ गए, तो फिर आंसर फाइनल करना पड़ेगा. USA is the answer, and let's see. United States has become the first country to announce a ban on the missile tests against space satellites. तो स्पेशल बात इसमें ये है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, who is the vice president of US? Anyone? It's right there on the screen. Yes, Kamala Harris. You guys know she is from Indian origin.
She chairs the National Space Council, announced that the debris created by such tests will have a lot of risk on astronauts and the satellites. So many countries including US, China, Russia and India have carried out such tests, and जिस वजह से space में already बहुत ज़्यादा debris है. And want to tell you that India has the least contribution there, but फिर भी देखो नाम रख दिया इन लोगों ने. That is also a question कि सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है स्पेस डेब्रिस में, एंड वो सबसे कम इंडिया का है, बट देन स्टिल वी हैव द नेम हियर. व्हाट टू डू? Okay, so this was the last question for the session today, guys, and second last question. Last question तो आप लोगों को पता ही है. How was the session? So please जल्दी से बता दे chat में how was the session. And we will be meeting again on Sunday at 10 p.m. with another session on innovation and entrepreneurship part 2. Okay. So waiting for your answers in the chat, and then would be going forward and closing my stream. Thank you so much AK. Thank you everyone. We'll see each other on Sunday then. उस बीच अगर आपकी कोई भी questions और queries हो regarding CMAT, पहले आप comment section का use करें, and if you still don't get an answer, definitely comment DM me. कुछ personal हो जो आपको share करना है, like your marks or something as such, then you can definitely DM me. I will definitely reply you back. Thank you so much Shaunak, Himanshu. Thanks Shine. Welcome everyone thank you everyone for coming, and welcome to everyone जिन्होंने थैंक यू लिखा है. ओके, एंड सी यू देन ऑन संडे. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइज. थैंक्स सामी, थैंक यू सो मच हर्षा. ओके, आज जीके कर रहा हूँ. ओके फाइन हर्षा, नो प्रॉब्लम, दैट्स टोटली फाइन. ठीक है, बस अच्छे से रिविजन करो, दैट्स द बेस्ट थिंग. थैंक्स दीपाली. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू.